students, welcome to all of you. Now let's move on to the next type. Please write down type 8, and that is nothing but exponential limits. मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करने को सीखने वाले हैं. ओके, ठीक है. नाउ इन एक्सपोनेंशियल लिमिट्स देयर आर टू रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड. ओके, तो लिख लो. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. रिजल्ट नंबर 1. Okay, what does result number 1 says? Write down limit x is tending towards 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a to the base e. This is result number 1. Please make a note of this. अच्छा, इसमें जो कंडीशन है वो भी आप नोट डाउन कर लो. Where a should be greater than 0. A should be a positive number. अच्छा, प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग. व्हेनेवर वी आर डूइंग कैलकुलस, इसमें जो लॉग वाला पार्ट लिखते हैं, इफ इट इज सिंपली रिटन एज log a also, then it also means same. So whenever we are talking in calculus, it is always to the base e, whether the base is written or not written. In calculus, base is always taken as e, natural base ही होता है. ओके, ये फर्स्ट रिजल्ट है. सेकेंड रिजल्ट नोट डाउन कर लो आप. लिमिट x is tending towards 0, okay, e raised to x minus 1 upon x. This will be equal to log e to the base e, and that will be nothing but equal to 1. Okay, दो रिजल्ट है. लिमिट x tending towards 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a to the base e होता है, where a should be a positive number. And second result is limit x is tending towards 0, e raised to x minus 1 upon x is equal to log a to base e, which is equal to 1. Now, please note down this. Now, let us move on to the problems. But once again, we will do the problems in the generalized form. ऐसा आप लिख लो. Generalized form में ही सारे problems करेंगे. ठीक है. Write down heading लिख लो आप. Evaluate the following limits. जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं करके बताऊंगा, वैसे आपको विथ नंबर्स दूंगा करने को. ओके, इन द जनरलाइज्ड फॉर्म विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स. देखो, क्वेश्चन नंबर 1, L is equal to limit x is tending towards 0. Write down a raised to px minus 1 upon x. Okay, now just let me apply the result and let me explain, then you make a note of this. Okay, now exponential limits में what does the result say? Limit, let's concentrate on result number 1 right now. Okay, क्या result बोलता है? Limit x is tending towards 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a होता है. Now, what should happen? Whatever is present in the power of a, जो a के पावर में प्रेजेंट है, वही सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए. It should be limit extending towards 0, a raised to x minus 1 by x. Whatever is present in the power of a, same thing should be present in the denominator. Then this is going to become nothing but equal to log a. Now just pay attention very carefully. Okay. Now a के पावर में क्या है? px है. x is already there. What is missing is p. रिजल्ट क्या बोलता है? जो a के पावर में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. So what we do? Multiply and divide by p. Okay. तो चलो write down for your reference. आप लिख लो multiply and divide by p. p से multiply करेंगे और p से divide करेंगे. So therefore L is equal to, what is this going to become? Write down limit x is tending towards 0, a raised to px minus 1 upon x पहले से है. अब हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर डिवाइडिंग बाय p
and we are also multiplying by p. This is compulsory. अगर ये रिजल्ट हमें अप्लाई करना है तो p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड करना जरूरी है. Okay, I rub off this condition. Okay, now see what is going to happen next. Just give me a minute. I will divide this into two halves. Okay, now what will happen? Check out. जो रिजल्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा. लिमिट x is tending towards 0. It will be applied on this. So according to the result, what will this become? Therefore, L is equal to, just compare. So this is going to become, absolutely, it is going to become nothing but log A. ये जो पूरा मैंने मार्क किया हुआ है, that is going to become log A, and this is multiplied by T into P. So therefore, this can be further written as P log A. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P into log A. Okay, now by the exponent law of logarithm, this P will go to the power of A. So therefore, value of the limit is equal to what? So log of A raised to P. This is the final answer and the problem is over. इस स्टेप के बाद ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया है, इसलिए ये log A बन गया. Check this out. It becomes log A and this will become nothing but P log A, and P goes to the power of A. Problem is over. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. Okay, अभी on similar basis, now what changes can be made, student? Why I call this as a generalized form? मैं इसको क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यहाँ पे A और P ऐसा रहेगा जनरल फॉर्म में. अब ये A और P के जगह पे क्वेश्चन में आपको नंबर दे दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. क्वेश्चन 2 आप लिख लो जो इसके ऊपर बेस्ड है. लिमिट x is tending towards 0, write down 3 to the power 4x minus 1 upon x दिया गया है. Now you observe a के जगह पे 3 है, p के जगह पे 4 है. Now evaluate this and tell me the answer. I am giving you time of 2 minutes. चलो, please start doing it. Okay. When you finish it off, students, please put your answer in your chat box or you can reply also. आप reply भी कर सकते हो या chat box में answer भी डाल सकते हो आप. Just compare and start doing exactly same way. A और P के जगह पे आप देखो, compare करो and solve it. Okay. Yes, I am seeing answers have already started coming. Yes, Rigveda is telling the correct answer. Yes, correct, Rigveda. So what is the answer over here? It is nothing but 4 into log 3. ठीक है, which can be further written as log of 3 to the power 4. ये 4 3 के पावर में चला जाएगा, and obviously we all know that 3 raised to 4 is nothing but equal to 81. So log 81 is the final answer and the problem is over. Please check. I hope you must have got the answer. Okay, let's move on to the next question. So 2 questions are over. Let's move on to the third one. Okay, just give me a minute to rub this off. Okay, अभी ये मैं हेडिंग हटा देता हूँ. ये सब जनरलाइज्ड फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ. Okay, just keep them in front of you so that you can keep watching them continuously. Okay, चलो write down problem number 3 पे जाते हैं. Okay, write down L is equal to limit x is tending towards 0. I continue in that generalized form only. Questions for write down a raised to x minus b raised to x upon x. Please make a note of this. Okay, if this question is asked in exam or this kind of question is asked, it's going to carry 2 marks, 2 to 3 marks, either 2 or maybe for 3 also. Okay, अभी हमें देखो क्या करना है स्टूडेंट. We cannot directly apply the result. Result आप देखो क्या है, limit x is tending towards 0, a raised to x minus 1, a raised to x के साथ minus 1 होना चाहिए. Now that minus 1 is missing over here, so some adjustment is to be done by us. तो देखो क्या एडजस्टमेंट करना है. राइट ऑन okay,
x is already there. Write down adding and subtracting 1 in the numerator. +1 -1 करना है. Adding and subtracting 1 in the numerator. Now initially I'm going stepwise. So please try to understand. क्योंकि अगर ये generalized वाले problems आपको आ गए तो A और B के खाली numbers change होने वाले हैं जब आप problems करोगे. Like we did in the previous one. Okay, write down. L is equal to limit x is tending towards 0 a raised to x minus b raised to x. ये पहले से था. अब हम क्या कर रहे हैं? Adding 1 and subtracting 1 and this is completely divided by x. This is our first step. Please make a note of this. अच्छा, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो -1 है, this -1 will be arranged along with a raised to x. And ये दोनों टर्म्स में से हम माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे. ठीक है ना? So let's understand by writing it down. तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? लिमिट x is tending towards 0 we will be having a raised to x -1. ये -1 a raised to x के साथ गया. ये दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा. तो ब्रैकेट में विल हैव b raised to x -1 and this is completely divided by x. अपॉन में x पहले से ही है. So that we already have. This is what we get. Okay. Now please be very careful, students, while you are writing down. I have seen many times ये जो a raised to x -1 है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा लिखते हैं a raised to x -1. वो ऐसा -1 ऐसा लिखता है कि वो ऐसा ऊपर खसका हुआ दिखता है and it becomes this way. So a raised to x -1 and a raised to x -1 ये दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है. They are totally different from each other. See, how do I read this? A raised to x -1 and this is a raised to x -1. So they are not similar to each other. ठीक है ना? So please make a note of this also. ये भी आप लिख के रखो कि they are not equal. दोनों अलग है. तो ध्यान से दिखना, -1 ऊपर शिफ्ट हो गया तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा. Okay? चलो, now what we do is we split this denominator. ये जो अपॉन वाला x है ना, ये split हो जाएगा. Okay, so write down next step. We continue ahead. Therefore, L is equal to लिखो limit x is tending towards 0. ठीक है, a raised to x -1 अपॉन x आएगा माइनस यहाँ पे मिलेगा b raised to x -1 अपॉन x आएगा एंड क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है, अपॉन x स्प्लिट कर दिया. नाउ ऑब्जर्व द रिजल्ट. नो डाउट लिमिट दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. स्प्लिट करके दिखाने की जरूरत नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट चेक आउट द फर्स्ट ब्रैकेट is going to become nothing but log a and the second bracket is going to become nothing but log b. Now base आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा. It is understood that it's to the base e whenever you are doing calculus. So L is equal to log a minus log b. So answer is nothing but equal to log of a by b and the problem is over. Please make a note of this. Okay. अभी इसके ऊपर एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करो. आई एम राइटिंग इट डाउन. राइट डाउन लिमिट x is tending towards 0. राइट डाउन मेक दिस एज 5 raised to x minus 9 raised to x upon x. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे. Okay, please see it very carefully. Same procedure, a raised to x minus b raised to x वाला ही procedure आपको apply करना है. a के जगह पे 5 दिया है और b के जगह पे मैंने 9 दिया हुआ है. These numbers can change at any point of time. Procedure is exactly, it's a carbon copy. ये problem का carbon copy है. a b को आप replace करते जाओ. Solve it. I give you time of 2 minutes. Start doing it. After you finish off, please let me know your answers. Value
ऑफ द लिमिट टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो एल का वैल्यू आप सॉल्व करके बताओ मेरे को। Yes, can anyone tell me the answer? What is the answer for this? Yes, you can put it in chat box also. आपका आंसर आपके चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप। Yes, yes, Divyata, correct. The answer for this will be nothing but log of 5/9. That's the final answer. Correct, absolutely. इसका आंसर log of a by b आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो इसका आंसर आपको log of 5/9 आएगा। वही सेम चीज करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर, rearrange and solve, you'll get the same. Okay, तो चलो fourth question is done. So let's move on to the fifth question. अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरलाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। ओके, so I just rub this off. This is already over, and so do I rub that off also. इसको भी मैं रब कर देता हूँ। Okay, madam, question number 5. L is equal to limit x is tending towards 0. Okay, लिखो आप a raised to x plus b raised to x minus 2 raised to x plus 1 whole upon x. ये हमें दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। This question is asked, it's going to carry 3 marks in exam. ठीक है, ये ऊपर दो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। These are the 2 results that I have written and this is the question. Okay, now what we'll be doing, अब देखो a raised to x है और b raised to x है। अब ये जो a raised to x है इसके साथ एक -1 चाहिए, ये जो b raised to x है इसके साथ भी एक -1 चाहिए। मींस वी वांट -1 दो बार चाहिए। तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, राइट डाउन एडिंग and subtracting 2 in the numerator, adding and subtracting 2 in the numerator. So let's see what happens. L is equal to limit x is tending towards 0, a raised to x plus b raised to x पहले से है, minus this will be written as 2 raised to x into 2 raised to 1. By the law of indices, this can be written as 2 raised to x into 2 raised to 1. अभी हम क्या कर रहे हैं, we are adding 2 and subtracting 2 and upon में x already है हमारे पास। Please check this out. कुछ नहीं किया, same thing, ये 2 raised to x plus 1 को ऐसा लिखा by the law of indices and added 2 and subtracted 2. ठीक है, अब देखो next step में क्या हो जाएगा। First you write down, then I'll explain. Limit x is tending towards 0. Okay, just let me write down. Now what is going to happen, student? ये 2 raised to 1 तो ये 2 understood है into, now this plus 2 remaining same and this minus 2 will be written as -1 ये जो -2 है इसको हम लिखेंगे -1 obviously there is a reason for doing that. Upon में x is going to remain the same, upon x same रहेगा। ठीक है, now let's check what is going to happen now. 1 second. ठीक है, now what we do students, now we are going to rearrange. अब क्या होगा, देखो ये जो -1 है वो एक a raised to x के साथ जाएगा, दूसरा वाला जो -1 है वो b raised to x के साथ जाएगा, और ये दोनों जो टर्म्स है ना इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा। From these 2 terms we will take -2 common. Okay, why so? So let us understand by writing it down. ठीक है, ये है 2 raised to x है। ठीक है, so this will be further equal to, लिखो next step, equal to limit x is tending towards 0. अच्छा, a raised to x के साथ गया -1, ये देखो इसमें से एक -1 है वो गया a raised to x के साथ,
ठीक है, प्लस एक गया b रेज टू x के साथ, अनदर -1 गोज अलॉन्ग विद b रेज टू x, और इसमें से -2 कॉमन लिया तो दिस इज 2 रेज टू x -1 and this is completely divided by x. Please check the step very carefully, it's a very important step. ठीक है, -2 यहाँ से कॉमन ले लिया. Now what is going to happen? Upon x तीनों को स्प्लिट हो जाएगा, we split upon x, so this will be further equal to, चलो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. देखो लिमिट x is tending towards 0, ये हो जाएगा a raised to x -1 by x plus this is going to be b raised to x -1 by x minus 2 raised to into this will be 2 raised to x -1 by x and the bracket closes. चाहिए तो ये सबको भी आप एक ब्रैकेट में डाल दो. अपॉन x सबको स्प्लिट हो गया. अब ये रिजल्ट देखो. Let's apply this result on each and every term. So therefore L is equal to, since मेरे पास जगह नहीं था मैंने लेफ्ट हैंड साइड में L नहीं लिखा है, वो भी मैं लिख रहा हूँ. So this is going to become log A, this is going to become log B, minus 2 will remain same and this is going to become nothing but log 2. Now check, we have to just simplify by using the laws of logarithm. Log A plus log B is going to become log of A into B हो जाएगा ये. Okay, now this 2 will go to the power of 2, तो ये बन जाएगा log 4 exponent law, और यहाँ पे product law apply किया है. I have already given you laws of logarithmic writing. Now therefore the value of the limit to be evaluated is nothing but log of AB by 4. We have applied the quotient law over here and the problem is finally over. Please make a note of this. Okay, on similar basis I give you one example for homework section. ये question number 5 हो गया ना. Question number 6 लिख लो आप homework के लिए. Limit x is tending towards 0. Okay, write down. Let's make this as 3 raised to x plus 5 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon x. ये क्वेश्चन आप लिख लो. Now see, I have not made many changes. ये जो a है उसके जगह पे 3 दिया है, ये b है उसके जगह पे हमने 5 दिया है. Rest everything is same. Please follow the same procedure that we did over here and get the answer. सिर्फ a और b change कर दिया बस, बाकी nothing has changed in this. Okay, so this is your homework section. Now I don't want the answers right now. Please solve it as homework section and let me know next time. Okay, तो चलो let's move on to the next question. ये आपका homework section है, exactly same है. 6th question हो चुका है, अभी हम 7th वाले पे जाएंगे. सेवेंथ वाला भी कुछ ऐसा ही है, almost something like this only that we have done. So question number 7 लिख लो आप. L is equal to limit x is tending towards 0, a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x. बस अभी इधर 3 टर्म्स है और यहाँ पे 3 raised to x plus 1 हो गया. चलो now start solving. Same procedure. अच्छा hint मैं दे देता हूँ. अच्छा before I give you hint, can anyone tell me what should be done over here? सोचो आप तब तक and tell me, जैसा हमने previous example किया वैसा हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? Yes, someone think and tell me. Yes, correct. Adding and subtracting 3 in the numerator. बराबर है. Very good. चलो. So let us add and subtract 3 in the numerator. अभी थोड़े steps हम कम लिखेंगे क्योंकि previous example में मैंने आपको सारे steps करके बताए थे. तो चलो write down. Adding and subtracting 3 in the numerator. So L is equal to, लिखो limit x is tending towards 0. अब मैं थोड़ा directly कर रहा हूँ.
ठीक है, a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 added 3 and subtracted 3 upon में x already है हमारे पास. Now you know what will happen? We have done it earlier also. अब ये जो -3 है, now this -3 is nothing but -1 -1 -1 तीन बार है, -3 -1 -1 -1. अब ये तीनों -1 एक a रेज टू एक्स के साथ जाएगा, एक b रेज टू एक्स के साथ जाएगा और एक c रेज टू एक्स के साथ जाएगा. ओके, तो चलो राइट, अब नेक्स्ट स्टेप लिखो आप. आफ्टर this will be further equal to limit x is tending towards 0 a raised to x -1, एक -1 a raised to x के साथ गया, ठीक है, दूसरा b raised to x के साथ जाएगा और तीसरा c raised to x के साथ जाएगा. तो ये -3 यूज हो गया, this -3 is used up, ठीक है, this is finished. Now from these two terms I will be taking -3 common. ये दोनों टर्म्स में से हम -3 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 raised to x -1 बचेगा and this is completely divided by x. Please make a note of this. I hope this is understood. Very simple, जो हमने previous problem में किया है, that same thing we are repeating over here. Okay? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, तो डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाएगा. तो चलो स्टार्ट डूइंग, स्प्लिट अप करो, डिनोमिनेटर अपॉन x सबको जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस विल बी, ओके, आई जस्ट कंटिन्यू इट एट द टॉप. इसके बाद ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूँ. अपॉन x सबको स्प्लिट हो जाएगा, तो व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, this will be equal to limit x is tending towards 0. ये ऐसा हो जाएगा, a raised to x minus 1 by x plus b raised to x minus 1 by x plus ये हो जाएगा c raised to x minus 1 by x minus 3 into 3 raised to x minus 1 by x and the bracket closes. ऐसा हो गया, अपॉन x सबको स्प्लिट हो गया. प्लीज चेक. अब मेरे पास आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द स्पेस, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला है. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, so now we are going to apply the result on all the terms that are available with us. So this is going to become log a plus log b plus log c minus 3 log 3. 3 कांस्टेंट है, वो 3 log 3 हो जाएगा, log a plus log b plus log c. So this is going to become nothing but log of abc हो जाएगा. ये it's going to become log of abc and this is going to become log 27. कैसे, ये 3 के पावर में गया, 3 cube is 27 and now finally what we do is I just rub this off. Log a minus log b will apply the quotient law. Will apply the quotient law over here, and the final answer is L is equal to, the value of the limit is nothing but log of ABC by 27, and the problem is done. Please check. Make a note of this. Okay, now let us write down one note, students, over here. But before we write down one note, please try to understand in these problems, ये जो problem number 1, 3, 5 and 1 to 7 जो सारे examples किए हैं, इसमें क्या changes हो सकते हैं, and if those changes are made, how we have to react to those changes. अभी से for example, do not write down. I will give you as a note and we'll do one problem also. अभी से for example, upon x नहीं देके, just an example, upon x नहीं देके suppose अपने को denominator में tan x दिया है, ठीक है, तो recollect we have already done it earlier also. Whenever the denominator contains tan x or sin x, we are supposed to divide numerator as well as denominator by x. I have given you as a note previously also. ठीक है ना, तो हम x से डिवाइड करेंगे यहाँ पे.
तो जब हम x से डिवाइड करेंगे उसका क्या फायदा होगा, ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग विल बी डिवाइडेड बाय x अपॉन में tan x विल बी आल्सो डिवाइडेड बाय x, अपॉन में पहले tan x था, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल हैपन, लिमिट इस रिजल्ट के हिसाब से tan x by x विल बिकम 1। अब tan x by x जब अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ से ये हट गया, अब यहाँ से ये हट गया तो ये प्रॉब्लम सेम बन गया ना, चेक। So if you are having sin x or tan x in the denominator, then we'll divide the numerator as well as denominator by x. तो लिख लो आप for your reference, write down note in problem number, ऐसा लिखो आप, in problem number 1, 3, 5 and 7. Okay, write down note in problem number 1, 3, 5 and 7. Okay, if denominator contains sin x or tan x, divide numerator as well as denominator by x. Always divide numerator as well as denominator by x. Okay, चलो now let us take down one problem that is dependent on this. इसके ऊपर एक example ले लेते हैं, लिखो that will be our question number 8, 7th हो गया, अभी 8th question लिख दो आप। Okay, write down L is equal to limit x is tending towards 0, okay, 5 raised to x minus 9 raised to x upon tan 2x ले लेते हैं, let us take it as tan 2x। जरूरी नहीं कि सिर्फ tan x ही होना चाहिए, tan 2x, sin 2x, tan 3x, tan 5x, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, नाउ व्हाट इट सेज, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो चलो सबसे पहले x से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। चलो बाय दैट टाइम x से आप डिवाइड करो और लिखो क्या मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल। तो L इज इक्वल टू लिमिट x is tending towards 0, ओके, इसमें क्या आएगा, 5 raised to x minus 9 raised to x will be divided by x upon, in the denominator this will be tan 2x divided by x। तो स्टेप हो गया, x से डिवाइड किया। ओके, as the note says we have done that way। अच्छा, अभी रिजल्ट tan theta by theta, recollect trigonometric limit, standard form, limit theta tending towards 0, tan theta by theta 1 होता है। Now without wasting time let us do the adjustment here only। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे divide by 2 and multiply by 2। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, tan theta by theta is 1। ओके, so write down what is left out students। so L is equal to, देखो limit x is tending towards 0, we are left out with 5 raised to x minus 9 raised to x by x upon, ये 1 हो जाएगा, this is going to become 1 according to the result and this 2 is going to remain। ठीक है, now what we are going to do is, आपको भी क्या करना है, रेफर क्वेश्चन नंबर 1। ये सॉल्व करने के लिए आप आपका क्वेश्चन नंबर 1 रेफर करो, और सॉल्विंग द न्यूमरेटर रेफर नॉट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 रेफर करो। a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x वाला जो प्रॉब्लम है वो आप रेफर करो। ठीक है, आई थिंक सो इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 2 नहीं 3 था।
इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3. 1 तो a raised to px वाला था, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया था. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. a raised to x minus b raised to x upon x वाला प्रॉब्लम देखो, रेफर, सॉल्व एंड प्लीज लेट मी नो द आंसर. अपॉन 2 तो सेम रहेगा ही. L is equal to 1/2 will remain same. ये जो 1/2 है वो रहेगा. इसको आपको इवेल्युएट करके मुझे बताना है. आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 minutes. स्टार्ट डूइंग इट. Yes, can someone tell me the answer? What is it? Yes, it's nothing but correct. Absolutely. इसका आंसर हमें आएगा log of 5/9. So the final answer is 1/2 log 5/9. अच्छा, अभी इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. जस्ट चेक. I will just rub this off. Final one step can simplify and write it down. अब ये जो 1/2 log 5/9 आया है ना स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं? This 1/2 can go to the power of 5/9 exponent log logarithm का. So L is equal to, this is going to become log of 5/9 to the power 1/2. Now that's nothing but equal to log root 5/9 हो जाएगा. That's it. Power 1/2 मतलब root हो गया. ये हमारा final answer. This is also correct. This form is also correct and this form is also correct. ये तीनों एक ही चीज है. This and this, they are all equivalent to each other. Please make a note of this. Okay. So remaining part of this will be continuing next time, students. Please write down till here. Okay. बाकी का part हम next time करेंगे in next lecture.